Okay, ठीक है. I'm going to start now. So the first question is the main purpose of the passage is to. इसका सबने क्या आंसर किया? इसका बल्कि ये तो चलो मैं खुद ही करवा दूंगी. पैसेज है ये. तो इसका आंसर था हमारा. The answer to this was D. ठीक है? It was D. ठीक है? Why can it not be A, etc. दूसरे इसलिए नहीं हो सकते because जो देखो the main purpose of the paragraph is to assert or discuss तो हो ही नहीं सकता because this was about discuss तो इसलिए नहीं हो सकता because it was about findings. ठीक है? तो ये नहीं हो सकता. Assert इसलिए नहीं हो सकता because assert is around assert इसलिए नहीं हो सकता because this was not asserting is a more formal or like a more dominant way to tell something. लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं था. He was just sharing the findings of his experiments. ठीक है? Describe a series of experiment on the way technology interferes with critical thinking. नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं है यहाँ पे. थिंकिंग की बात नहीं थी यहाँ पे, बात थी मेमोराइजेशन की. इसलिए ये तो है ही नहीं. ठीक है? डी है D है share the findings of a study examining the effect of computer use on memory recall. So this was the right answer. ठीक है? और IB में ये वाले सवाल नहीं होते लाइंस को रेफर करने वाले. So we won't do this. Moving on to question number 3. Okay. In context, reference to remembering a relative's birthday is mainly to. इसका आंसर जो है वो था आपका D. ठीक है? Why was it D? सारे ऑप्शंस देखते हैं कि show that people who are closely related tend to have shared memories. नहीं, ये तो this was not the purpose of the passage. Demonstrate how people initially developed external sources of memory. देखो ये जरूर बताया हुआ है कि how do people have external sources of memory, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि how they have initially developed. The main purpose was not this. ठीक है? Give me a second guys, एक second. I'm coming. Yes, okay, so where were we? Question number 13 का part D इसलिए it's the answer because A इसलिए देखो initially developed की बात यहाँ पे कहीं हुई भी नहीं है. ठीक है? तो that will not be the answer. Moving on to option number C. Option number C says कि emphasize the effectiveness and accuracy of transactive memory resources. नहीं, वो effectiveness की बात नहीं कर रहे. In fact, they're saying मतलब it's not talking about the accuracy effectiveness. ठीक है? So option number C will not be the right answer. Option number D is illustrate the concept of a transactive memory source using a familiar situation. So this was the right answer because the main purpose of using this example was to familiarize, to connect to the readers. So yeah, so that was the main purpose. Question number 14 is based on the information in the passage, which of the following would be considered a transactive memory source? Okay, so अगर इसमें देखें तो choice number B is the right answer. ठीक है? Why? It's because कि ट्रांजैक्टिव मेमोरी होती क्या है. ऊपर थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि ट्रांजैक्टिव मेमोरी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एक सेकंड यहाँ पर, ये ट्रांजैक्टिव मेमोरी, it's this whole network of memory where you don't have to remember anything in the world yourself. This is what transactive memory is, basically using external resources
to memorize things या using other resources. ठीक है, तो इसका आंसर B इसलिए because obviously you're not remembering something, but in fact you're using something else to remember something. ठीक है, that's why B is the answer. A will not be the answer because it's talking about in memory. तो obviously souvenir की तो बात यहाँ, souvenir does not apply to a transactive memory source because you're not remembering something. Memories तो यहाँ पे जो memory source की बात हुई, they're mostly about facts and all those things. So इसलिए A तो आंसर नहीं है. A library database that helps you locate, ये लोकेशन की बात हो रही है तो ये भी नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट अगर यहाँ पे ये बोला होता है ना कि library database that helps you remember what you studied in a book या something, तो ये probably that could be the answer. But यहाँ पे location की बात हो रही है, so that's not the right answer. A website that helps user plan, not the right answer. ठीक है, why? Because यहाँ पे planning वगैरह की बात हो रही है, तो इसलिए that cannot be the right answer. ठीक है, हम यहाँ पे transactive memory source की memorizing की बात कर रहे हैं. ठीक है, as used in line number 26, extensions mostly any means extension 26. Okay. Now computers and technology as well are becoming virtual extensions of our memory. अगर आप इसको पढ़ोगे तो this इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि oh, there is something that add to our memory, that are extending our memory, that is another source that helps us memorizing things, basically an addition. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी है. ठीक है, डिलेज इन लेंथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सबके साथ पुट करके देखेंगे तो नहीं सेंस बन रहा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई एडिशंस टू इज द राइट आंसर. एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे रीड बिटवीन द लाइंस अप करो, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अगर आप इसके निकालो तो इसका आंसर इन एडिशंस टू हो रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 is the discussion of the experiment suggests that people are inclined to think of specific information resources in response to being. C is the right answer. Why? C इसलिए right answer है because उन्होंने question को समझना बहुत important है. The question is the discussion of experiments suggest that people are inclined to think of a specific information resource in response to. वो कह रहे हैं कि लोग क्यों और कब सोचते हैं about information sources. क्यों, जो कब उनके दिमाग में ये आता है कि ओ अच्छा इधर मैंने इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है. व्हाट इज दैट सिचुएशन? दैट इज द क्वेश्चन. दैट सिचुएशन कैन बी व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज डिटेल्स दैट विल बी मेड अनएक्सेसिबल. नहीं, तब वो इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचते. बेसिकली जब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि लेट्स से मैंने आपसे पूछा है कि अच्छा मुझे ना बताओ कि आपकी जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जैसे what passage did we do last time, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा वो मैंने पैसेज यहाँ पे सेव किया हुआ है, लेट मी जस्ट गो देयर एंड चेक मैंने क्या करा. ठीक है, तो यू विल रिमेंबर कि वो पैसेज हमने कब कहाँ कैसे किया था, बट इट्स लेस लाइकली कि आपको उसके कंटेंट्स याद होंगे. तो दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग. तो इसका आंसर इसलिए सी है बिकॉज जब हम उनको वो सवाल पूछते हैं जो उनसे फेमिलियर नहीं होते. देखो, ऑलरेडी फेमिलियर का मतलब ये नहीं कि उनको कभी भी वो उन्होंने चीज पढ़ी नहीं होती. ऑलरेडी फेमिलियर का मतलब मे बी दे डोंट रिमेंबर दैट एट द मोमेंट वगैरह. तो तब जब उनसे उनको सवाल पूछते हैं तो उनको लगता है ओ अच्छा ये तो मैंने यहाँ रिस्टोर किया हुआ है. और इवन इफ इट्स समथिंग जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ा हुआ तो देर से अच्छा ये तो गूगल करूंगा तो मुझे याद आ जाएगा. दैट्स व्हाई इसका आंसर सी है. 17 हमने करना नहीं है बिकॉज ये प्रीवियस क्वेश्चन वाला है. 18, as used in line number 67, employ most nearly means. Yeah, अच्छा. Students who have trouble remembering distinct facts, for example, may struggle to employ these facts in critical thinking. इसको पढ़ के लग रहा है कि अच्छा वो कह रहे हैं कि अगर उनको याद ही नहीं होंगे तो वो यूज कैसे करेंगे. ठीक है, they're basically saying that if उनको याद ही नहीं होगा तो वो यूज कैसे करेंगे. ठीक है, तो इसलिए जो है ना इसका आंसर हमारा ए है, यूटिलाइज है. इनरोल, एग्जर्ट, असाइन, ऑल ऑफ दीज आर नॉट मेकिंग सेंस. अगर आप इसमें जाकर पढ़ो तो यहाँ पर अगर आप इनरोल डालो में स्ट्रगल टू इनरोल दोस फैक्ट्स डज नॉट मेक सेंस, असाइन दोस फैक्ट्स डज नॉट मेक सेंस. और फोर्थ ऑप्शन क्या था? exert these facts does not make sense. Use these facts का sense अभी भी बनता है कि yes, they if they don't remember it, they may not be able to use those facts. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है आपका ए हो गया. क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देख लेते हैं पहले हम जाकर, बल्कि ग्राफ बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, according to the graph, approximately what percentage of participants remembered both parts of the information given to them during the fourth experiment. They're saying कि हमें वो देखना है कि जिन्होंने दोनों parts of information को remember किया था. अब हम ऊपर जाएंगे and we'll see this.
remember both का कहाँ पे जो nothing है, this is just the folder, this is just the location, sorry, this is just the location, this is just the folder, and this is both. ठीक है, तो this is a straightforward question. 15 और 20 के बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा 15 से 20 के बीच में होगा, and that is 17. So that is the right answer. सही है. Moving on to the last question for this passage. Based on the description of Wagner's fourth experiment, what is the most likely explanation for the findings of the largest single group of participants represented on the graph? सबसे पहले तो जाके फोर्थ एक्सपेरिमेंट को एक दफा दोबारा पढ़ लो, वो था क्या? फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, in a fourth experiment, participants typed into computer statements that they were told to be saved in specific folders. Next, they were asked to recall the statements. Finally, they were given cues to the wording and asked to name the folders where the statements were stored. The participants proved better able to recall the folder locations than the statement themselves. So basically, वो ये जो Wagner है ना, he is talking about this. मतलब ज़्यादातर participants को ये पता था, ये याद रहा था, not the statement. So he's talking about this crowd. However, the question is saying कि क्या explanation होगी जो largest single group है ग्राफ में, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन देगा वेगनर? लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप कौन सा जिनको कुछ भी याद नहीं था, तो उसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन उसने दी नहीं है, उसकी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं कि उनको क्यों याद नहीं था, क्या याद नहीं था. तो इसका आंसर जो है हमारा डी होगा. ठीक है. Why can it not be दूसरे options? Sorry, why can it not be A, B and C? Those participants focused on remembering the folder locations. No, because उनको तो कुछ भी याद नहीं था. अगर folder locations याद करते तो उनको folder location याद होती, उनको तो कुछ भी याद नहीं था. Those participants attempted to remember the statements. Same reason that does not apply. Those participants did not attempt to remember any specific piece of information. ये हो सकता है, but it is not implied in the experiment या उसके results या graph में कि ये हुआ होगा, इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं कि why don't they recall any information. There is not enough information to determine the cause of the results for these participants. हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने जो information retain नहीं की, why is that? Maybe they were not paying attention, maybe they were thinking about the things, maybe they did not even try, maybe they tried but failed. हमें कुछ नहीं पता. So we cannot say anything because हमारे पास उस चीज़ की information नहीं है. ठीक है? And that concludes the passage. किसी को कोई भी सवाल है in any of the questions, or should I move on to the agenda for today? Okay, कोई सवाल नहीं रहा. Let's move on to close passages. ठीक है, कल हमने पैसेज नंबर 5 तक किया था. हाँ, 5 तक किया था. वी गोइंग टू मूव ऑन टू पैसेज नंबर 6 एंड ये पैसेज आप लोग पढ़ें. टेक 3 to 4 minutes, try solving this code because अब हमने एक क्लास कर ली है, तो now I want you guys to solve these code. I'm going to give you exact 5 minutes and 8:38 पे I'm going to start explaining. And I'm going to randomly ask anyone जैसे मैं करती हूँ, so please be prepared. Guys, please refrain from typing the answers in the questions if I have not asked yet. सबको करने दो and then we will solve them together. Don't worry. शकील, अगर आपने 6 कर लिया है तो 7 कर लो, but I think आपने 7 भी कर ही लिया, तो फिर आप रुक जाओगे.
यस मुसव्विर, कौन सी वीडियो नहीं चल रही? Okay guys, last minute. Is everyone done? Should I start it? Why are there no responses today? हो गया सबका? सोनी, वाजिद, शब्बीर, लाइबा, Hakeem, Sarera. Everyone, are you guys done? Should I start now? ठीक है, चलो मैं start करती हूँ. Okay. Mukeem, can you please answer the first one? Mukeem, can you please answer the first one? Okay, Savera, can you please answer the first one? Am I audible, guys? Why are there no responses today? Okay, Savera said A. ठीक है, okay. The correct answer is A. ठीक है, बाकी सब बताया, बाकी सब ने क्या responses किए थे इसके? C. Okay, A. Okay, mostly are A's. ओके, डी सोचा था. अच्छा ठीक है. देखो, सी सी और ए की मीनिंग तो एक ही है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो सकते अल्टरनेटिव? बी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. देखो, वाटरमेलन्स गो टू इंडिया डज नॉट मेक सेंस, ठीक है. वाटरमेलन्स ग्रू टू इंडिया डज नॉट मेक सेंस. वाटरमेलन्स, why does it not make sense? Because they grow in, they don't grow to. सही है. सेम रीजन इज है. वाटरमेलन्स ग्रू टू नहीं इंडिया नहीं हो सकता. वाटरमेलन्स ग्रो टू इंडिया नहीं हो सकता. सिमिलरली वाटरमेलन्स अराइव टू इंडिया, हाँ ये तो हो सकता है. वाटरमेलन्स अराइव टू इंडिया, बट देखो, अराइवल की बात, अराइवल इज लाइक जहाँ पे मोस्टली यूज फॉर, मतलब इवन इफ यू यूज इट ना, अगर आपके पास, आई वुड से दिस इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, ठीक है. मतलब अगर मैं बोलती हूँ वाटरमेलन्स अराइव टू इंडिया बाय द 4th century, दैट मेक्स इट सीम वेरी वेड, ठीक है, बिकॉज वाटरमेलन आर समथिंग जो खुद नहीं आ सकते. बिकॉज अराइवल की अगर आप बात करो, तो अराइव वो चीजें होती हैं, मतलब दे सेल्फ अराइव, राइट. एंड हम केम यहाँ पे इसलिए यूज करेंगे बिकॉज दैट डज मेक दैट मेक्स द मोस्ट सेंस, ठीक है. वाटरमेलन्स केम टू इंडिया बाय द 4th century AD, तो A makes the most sense. C does not make that much sense. However, अगर आपने practice नहीं की हुई है, if you're doing this for the first time, तो maybe you will use C. लेकिन अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, अगर हम केम यूज करें तो दैट इंडिकेट्स कि अच्छा कोई चीज, द आइडिया केम. सही है. हाउ कैन वाटरमेलन्स कम फ्रूट तो grow. Emma, can you एक तो type to everyone, and secondly
how watermelons came, देखो watermelons जो है ना, they are not indicating यहाँ पर कि वो इंडिया में ग्रो होते थे या उनका कॉन्सेप्ट था. सही है, योर क्वेश्चन इज वैलिड कि watermelons ग्रो होते हैं, ठीक है, बट watermelons के आइडिया की बात हो रही है, या और प्लस यहाँ पे देखो, इवन इफ यू यूज ग्रो ना, तो watermelons cannot grow to India. You cannot grow to somewhere. You can grow in some, you can grow in India, ठीक है, you cannot grow to India. तो डी और ई तो हो ही नहीं सकते. सही है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन. अब समझ आ गया आपको अहमद? केम टू इंडिया का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस करने के लिए कि वाटरमेलन्स का आइडिया या वाटरमेलन्स की कंजम्पशन या द होल फ्रूट, द आइडिया बिहाइंड द फ्रूट, इट केम टू इंडिया. सही है. अराइव्ड की बात अलग हो जाती है, केम की बात अलग हो जाती है. ठीक है. तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. कैन निशा प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 2? निशा, are you there? Okay guys, azan break. Okay guys, let's start. Question number 2, Nisha, can you please answer? Jaldi se, we are already late today. Okay, Nisha said D, which is the right answer. Okay, chalo, let's look into the options. Sushruta, the great Indian physician, dash wrote Sushruta Samhita. We will guess that this is a book, ठीक है? Who wrote Sushruta Samhita mentions that watermelon growth, ठीक है? तो यहाँ पे did नहीं आ सकता. Sushruta, the great Indian physician, did wrote. सबसे पहली बात did के साथ कभी भी, and I repeat, कभी भी past tense नहीं आता, और this does not make sense, क्योंकि यहाँ पे जो ये who के बाद से लेकर सुश्रुता समीता तक का है ना, that is a modifier, ठीक है? तो ये modifier है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. That is something जो हम extra बोलते हैं. जैसे मैं बोलती हूँ अली,
who likes to study, who likes to who likes to play, comma did not want to study. ठीक है, तो who likes to play जो है ना वो एक एडिशनल बात आ जाती है. ठीक है, तो जब हम कोई भी एडिशनल बात करते हैं ना उसको हम अलग करते हैं. ठीक है, अब जैसे लेट्स से पाकिस्तान, Pakistan, comma, which got independence in 1947, comma, is facing a lot of problems today. ठीक है, तो जो बीच में जो सेंटेंस आ रहा है ना दैट इज अ मॉडिफायर. तो जब भी हम मॉडिफायर को डिस्क्राइब करते हैं ना तो हु विच ऐसे हु विच और ऐसे करके डिस्क्राइब करते हैं. और प्लस हम एक बंदे को डिस्क्राइब करें, सुश्रुता द ग्रेट इंडियन फिजिशियन हु रोट सुश्रुता समीता कॉमा मेंशन्स द वाटरमेलन ऑफ फोन. ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पर हु आ जाएगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. मार्वी, कैन यू प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 3? after did, yes, after did हम हमेशा हमेशा present tense use करते हैं. This is one of the pet peeves that I have कि please don't use did के बाद past tense कभी भी. ठीक है, anyway Marvi, please you, question number 3 का आंसर दे दो. C. Okay, E is the right answer. Marvi, how can you grow watermelons from the banks of the river? देखो bank of the river, देखो this is a river. ठीक है, banks of the river की बात हो रही है कि जो side होता है, तो उस उससे नहीं grow सकता. from the banks of the river मतलब river की bank जो होती है ना उसके साथ साथ वाटरमेलन ग्रो हो रहे थे. दैट्स व्हाट दे मेंट. तो इसलिए अलोंग इसका आंसर होगा कि जैसे जैसे रिवर फ्लो हो रहा था उसके साथ उसी लाइन में वाटरमेलन वर ग्रोइंग उसकी बैंक के पास. ठीक है, सो इसलिए इसका आंसर अब नहीं हो सकता. बैंक के ऊपर नहीं ग्रो कर सकते, बैंक के बाहर नहीं ग्रो कर सकते, बैंक से ग्रो नहीं कर सकते और बैंक के आगे का नहीं मतलब है. इसलिए इसका आंसर अलोंग है. ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? Devika, can you please answer question number 4? A. अच्छा, Devika, this question is for you. एक दफा रीड करो इसको दोबारा, फोर्थ को. ठीक है, it are also mentioned in ancient books. Do you think that makes sense? Okay, चलो. You said E. Those are also mentioned in ancient books. अच्छा. Um, most of you said B या फिर E. अच्छा, the correct answer is B. Let's देखो क्लोज पैसेजेस में ना एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इट्स ऑल अबाउट लॉजिक. जैसे मैं कल से बोलती हुई आ रही हूँ, आई थिंक दिस इज द 10th टाइम दैट आई एम रिपीटिंग. जब भी ऑप्शन चूज करो, गो बैक टू द पैसेज, रीड इट एंड सी इफ इट मेक्स सेंस. ठीक है, देयर ऑल चलो फर्स्ट वाले ऑप्शन से करते हैं. It are also mentioned in ancient books. Does not make sense. They are also mentioned in ancient books. Makes sense. देखो, अच्छा चलो बल्कि बात, some are also mentioned. हम some की बात, हम वाटरमेलन्स की बात करें तो ऑब्वियसली कुछ को मेंशन करना अलग बात है. और देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टाइम, ये बता रहे हैं कि वाटरमेलन इतनी पुरानी एक स्टेप मतलब एक पुराना फ्रूट है जिसको हम 4th AD से खाते आ रहे हैं. एंड इसको हम इधर इससे लिंक करें कि उसका जिक्र एंशिएंट बुक्स में भी है. ठीक है, तो सम ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेंशन सम वाटरमेलन्स एंड नॉट मेंशन द अदर वाटरमेलन्स, राइट? यस, that are for this is for watermelons. Why is it for watermelons? अच्छा देखो, अगर मतलब this has to be for watermelon. Why? Because Sushruta is a single person. तो हम अगर यहाँ पे ऑप्शन पे ही होना चाहिए, तो यहाँ पे सारे जो है ना प्लूरल में है. एंड प्लस दे टॉक, देखो शुरू से बोलो वाटरमेलन्स इन टू इंडिया, वाटरमेलन्स केम टू इंडिया विद द 4th century AD. Sushruta the great Indian physician who wrote Sushruta Samhita mentions that watermelons were grown along the banks of the river. They are also mentioned in ancient books. They are talking about the watermelons. ठीक है, that are also mentioned in ancient books नहीं हो सकता. They are talking about watermelons. That's a sentence वैसे तो ग्रामर में स्टार्ट करना नहीं चाहिए. ठीक है, तो दैट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता मोस्टली. ठीक है, अनलेस रेयर एक्सेप्शंस होती हैं. तो दोज आर आल्सो इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज दोज हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं व्हेन वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग या वी आर रेफरिंग टू सम स्पेसिफिक थिंग्स. लेकिन हम तो जनरल वाटरमेलन्स की बात कर रहे हैं ना. जैसे मैं चलो समझो मैं बोलती हूँ कि यस दे आर मेंशन्ड इन, मैं बोलती हूँ कि दे लाइक टू ईट, नहीं बल्कि मैं बोलती हूँ कि जैसे मैं वाटरमेलन की बात करें और मैं कहती हूँ कि दे आर सोल्ड ऑन कार्ड्स. लेकिन मैं अगर कुछ वाटरमेलन की तरफ पॉइंट करती हूँ या आई एम डायरेक्टिंग टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक वाटरमेलन, बोलती हूँ दोस आर
सो आप दैट यूज करते हो तो देखो क्या बनता है. दैट अगर आप यूज करते हो तो इट बिकम्स कि दैट आर आल्सो मेंशन इन एंशिएंट बुक्स. ठीक है, दैट्स इज. अच्छा, बाय द वे, इफ यू गाइस आर कंफ्यूज, यहाँ पे फुल स्टॉप है. यहाँ पे फुल, देखो मेंशन नहीं किया हुआ, मुझे भी नहीं पता था फुल स्टॉप है, लेकिन यू यू हैव टू सी. ठीक है, फुल स्टॉप है यहाँ पे. तभी तो दे, अब देखो देखो, अगर आप लोग नहीं फुल स्टॉप लगाते ना. ये क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 का लेट मी. Yes, it's they. Sentence is ending because देखो, Sushruta, the great physician who wrote Sushruta Samhita, mentions that watermelons are grown along the banks of river that are also mentioned in ancient books. देखो, that अगर मैं यहाँ यूज करती हूँ ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि that banks of river की बात हो रही है या पे watermelons की बात हो रही है. यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है. सही है. अच्छा, मैं क्लैरिफाई करती हूँ, यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है इसलिए दे यूज हो रहा है. ठीक है. Does that make sense, guys? Okay, चलो. Moving on to question number 5. Farida, can you please answer question number 5? Okay. Farida said it's C, and the correct answer is C. Okay, let's go to the options. Okay, Ahmed, आपको कोई और लगा था? Because you have a lot of questions to push. Okay, do you think कोई और answer था या anything? चलो, everyone said C. Let's read this एक बार. It was taken to China. No, it is C. Okay, good. It was taken to China in the 10th to 11th century. Yeah, it was took to China. Does not make sense. ठीक है. It was gave to China. Given होता तो कह सकते थे, gave तो नहीं हो सकता. It was take to China. ये was है, तो first tense तो आ ही नहीं सकता. ठीक है. My internet is lagging today. मेरी आवाज clear है सबको? Okay, ठीक है. Given, नहीं, आई एम सेइंग कि अगर होता ना गिवन तो कह सकते थे, लेकिन अब मतलब गिवन तो होगा नहीं, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई और थर्ड फॉर्म होती ना, सी दिस इज द थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो इसे देखो, उन्होंने कोई और थर्ड फॉर्म नहीं दी. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज एन आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म, दिस इज द प्रेजेंट फॉर्म, दिस इज द पास्ट फॉर्म, दिस इज द पास्ट फॉर्म, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म. तो इसलिए जो है ना, इसका आंसर टेकन है. बाय चाइना क्यों नहीं? क्योंकि बाय ऑप्शन ही नहीं है. अच्छा, यू आर सेइंग कि यू इट वाज टेकन बाय चाइना. अच्छा, क्योंकि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि चाइना तक लेकर गए थे. चाइना ने लिया नहीं, हम चाइना तक लेकर गए थे. इट वाज टेकन टू चाइना. चाइना अगर हम बाय कर देते ना, तो इट मीन्स कि चाइना ने ले लिया था, बट हम बात कर रहे हैं चाइना तक लेकर गए थे. इसलिए जो है ना, यहाँ पर टू आएगा. इट वाज टेकन टू चाइना एंड इट वाज टेकन बाय चाइना. दैट इज डिफरेंट. अगर मैं बोलती हूँ कि द चाइल्ड वाज टेकन टू अ डॉक्टर, तो दैट मीन्स कि उसको वहां तक को लिया था. गेट इट? इसलिए यस, चाइना को दिए नहीं गए. यस, बेसिकली वहां पर लेकर गए थे. इट वाज नॉट गिवन टू चाइना, इट वाज टेकन टू चाइना. टेकन टू चाइना का मतलब है वहां पर लेकर गए थे. ठीक है. अच्छा, इट वाज टेकन टू चाइना इन द 10th or 11th century. एंड ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोनी, can you please answer question number 6? नहीं, question, हाँ, question number 6. Is Sony here? अच्छा, if she is not answering, Wajid, can you please answer question number 6? Okay, you guys said C. Perfect. C answer है इसका. Okay, Mukim is saying A. और कोई है जिसको कोई और ऑप्शन लगाओ? Okay, everyone is saying C except Mukim. चलो Mukim, let me explain to you. देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि it was taken to China in the 10th or 11th century, and dash it is grown throughout the tropics. And sorry, and dash it is grown throughout the tropics. सही है. अच्छा, also अगर मैं use करती हूँ ना, सही है, also it is grown throughout the tropics. That is grammatically incorrect. अगर मुझे also use करना होता ना, तो I would have said it was taken to China in the 10th or 11th century and is also grown throughout the tropics. Do you get it? So, and also it is grown, that is
grammatically not correct. ठीक है, language wise that is not correct. So if you wanted to use also, you would have said and is also grown throughout the tropics. ठीक है, is तो also is not the option. Tropics, you're asking what tropics mean या tropic का मतलब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा एनीवे दो नहीं हो सकता, टुमारो एंड इट इज टुमारो तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता, सून का भी सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हम, अच्छा आप बोल रहे हैं कि नाउ क्यों है, नाउ इसलिए कि वो कह रहे हैं वो चाइना में 10th और 11th सेंचुरी में लेकर गए थे एंड अभी लाइक अभी एज इन अब तक एज इन अभी दैट इज ऑल्सो ग्रोन इन दी in China, in the tropics of China. What does tropic means? मुकीम, ट्रॉपिक्स का मतलब होता है बेसिकली वो रीजन्स जो इक्वेटर को सराउंड करते हैं ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब ट्रॉपिक्स होते हैं दैट रफली लाई इन द मिडल ऑफ द अर्थ, इक्वेटर के पास जो लाई करते हैं, ठीक है। दोज आर द ट्रॉपिक्स। चाइना, आई एम होपिंग यू नो कि चाइना की पोजीशन मैप में जो दैट इज ऑलमोस्ट इन द मिडल, तो ट्रॉपिक्स ऑफ चाइना की बात हो रही है, ठीक है। ट्रॉपिक्स ऑफ चाइना नहीं, सॉरी, ट्रॉपिक्स ऑफ द अर्थ की बात हो रही है कि वो मतलब बस एक पोजीशन बता रहे हैं, बेसिकली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। Question number 7, let's see, question number 7 answer I want from second live चलिए, मैंने आपसे पूछा था, चलो let me answer. अच्छा चलो Rao, you can answer question number 7. Okay, question number 7, Rao said it's A. Okay, the correct answer is D. अच्छा, no ma'am, please see. कैसे अब है तो है, देखो, हाँ, ओके, लेट मी रीड इट एक साथ, ठीक है। look at this, the heaviest fruit, अच्छा देखो, if I was you guys ना, देखो, I'm talking from experience, इससे मुझे पता है, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करें। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेइंग द हेवीएस्ट फ्रूट वाज 118, एग्जैक्ट नेक्स्ट सेंटेंस ये कह रहा है कि 118 केजी है, ठीक है। और ये देयर सेइंग कि दिस इज 25 केजी, ठीक है। वेट की बात हो रही है ना, यस, वेट की तो बात हो रही है, लेकिन इसका आंसर लिखा तो डी है, डी होना चाहिए ना। अच्छा देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को, अच्छा गाइस रुक जाओ, मैं समझा रही हूँ, पहले आप लोग टाइप तो करना बंद करो, मेरी बात सुनो। अगर यहाँ पे आंसर होता ना लाइटर, सही है, तो ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि वाइल्ड वाटरमेलन्स आर स्मॉलर या लाइटर देन कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं वाइल्ड वाटरमेलन जो ना वो वे अप टू करते हैं 25 केजी, और जो दूसरे वाटरमेलन जैसे हेवीएस्ट वाटरमेलन जो है ना, मैं समझा रही हूँ आज, सुन तो लो, जो स्मॉलेस्ट वाटर जो हेवीएस्ट वाटरमेलन है ना, दे वे अप टू 118 केजी, ठीक है। लेकिन जो वाइल्ड वाटरमेलन है ना, वो उनका वेट इनसे कम है, they weigh up to 25 kg, और ये वाले up to 118 kg है। अगर ऑप्शन में लाइटर होता ना, तो दैट वुड हैव बीन राइट, मतलब वो या तो स्मॉलर देते या तो वो लाइटर देते। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि वाइल्ड वाटरमेलन छोटे और कम वेट में होते हैं, तो या तो स्मॉलर आंसर होगा या लाइटर आंसर होगा। एंड सिंस हमारे बाकी हेवियर इससे नहीं हो सकता, बिकॉज वो कह रहे हैं कि वाइल्ड वाटरमेलन दे वे अप टू 25 kg एंड बाकी वाटरमेलन जो है ना उनकी हेवियस्ट 118 है। तो बेसिकली ये इंप्लाई कर रहे हैं कि ये वाले जो है ना वो लाइटर होते हैं और स्मॉलर होते हैं। तो अगर हमारे पास लाइटर का ऑप्शन नहीं है तो स्मॉलर ऑप्शन चाहिए। एवरीवन गॉट इट, सबको समझ आ गई वाला सवाल। दैट इज व्हाई पूरे को साथ रीड करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सम ऑफ व्हिच फोकस ऑन हेवियर शकील, कैन यू प्लीज, मुझे समझ नहीं आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा एनीवे, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस, बाकी सबको समझ आ गया। अक्सा, फातिमा, फातिमा, आई वुड रियली इनकरेज कि आप, आई वुड रियली बी अप्रिशिएट अगर आप पार्टिसिपेट करें। और बाकी सबको समझ आ गया है। सवेरा, हाँ, सेमीकोलन तो जब यूज होता है ना, जब सेंटेंस चेंज होता है शकील। मैम स्मॉलर इज नॉट, यस देखो लाइम मेरी बात सुनो, रुको, गौर से सुनना, ठीक है। देयर सेइंग कि रुको, लेट मी, यू आर नॉट
बट यहाँ पर एक टेक्निकल चीज इन्वॉल्व टू कल्टिवेटेड वंस, सम ऑफ विच वे अप टू 25 के। वो ये कह रहे हैं कि 25 के, बेसिकली वो उनका मैक्सिमम वेट या उनका एवरेज वेट इज 25 के, ठीक है आइबा। देन आगे वो कह रहे हैं कि द हेवीएस्ट फ्रूट वेइंग 118 के, लेकिन जो बाकी वाटरमेलन है ना उसमें से हेवीएस्ट 118 था। अगर वाइल्ड वाटरमेलन वो 25 केजीज नहीं होते, इज लेस देन 118 केजी। वो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि वाइल्ड वाटरमेलन आर डैश कंपेयर्ड टू कल्टिवेटेड केजीज, ठीक है। लेकिन जो हेवीएस्ट वाटरमेलन जो है ना वो 118 केजी है, ठीक है। हेवियर होता तो मोर देन एग्जैक्टली देखो, यहाँ पर अगर लेट्स से मैं बोलती हूँ ना 18 केजी, तो वाइल्ड वाटरमेलन आर लाइटर कंपेयर्ड टू कल्टिवेटेड वंस, तो फिर सही हो जाता। लेकिन सिंस देखो वाटरमेलन इतना तो कॉमन सेंस हम सब में कि अगर जितना छोटा फ्रूट होगा उतना उसका कम वेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि वो छोटे थे और उनका मैक्सिमम वेट 25 केजी था। Does that make sense, Lanu? ठीक है। Amani, can you please answer the last question? Okay, the B is right. This fruit weighing 118 kg was produced at Hope, Arkansas, USA, the state to which President Clinton belongs. ठीक है। Obviously, a grew होता तो grew in होना चाहिए था, rules होता तो rules in होना चाहिए था, elects तो does not make sense, elected भी sense नहीं होता, ठीक है। तो belongs the right answer, ठीक है। हो गया। Is there any questions? Any question you want me to repeat? Any query? Any confusion before I move on to the next passage? 7 वाला। अच्छा मैं 7 दोबारा समझा देती हूँ। Anyone else जिसको कोई confusion हो? रूल्स बाय नहीं होता। अगर रूल्स होता ना देविका, तो इट वुड बी के द स्टेट टू विच द स्टेट टू विच नहीं होता, द स्टेट इन विच होता। फिर वो द स्टेट इन विच प्रेसिडेंट क्लिंटन रूल्स। डिड यू गेट इट? समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? अगर यहाँ पे टू होता ना तो वो बात करें, अगर टू होता तो बिलोंग्स आएगा, अगर इन होता तो रूल्स हो जाता, ठीक है। अच्छा किसने मुझसे सवाल, अच्छा 5 रिपीट करना है और 7 रिपीट करना है। मुकीम ने मुझसे 7 पूछा था और 5 का किसने बोला है? चैट नीचे नहीं हो रही। हाँ वाजिब ने बोला है, ठीक है। हाँ बिलोंग्स टू, ठीक है। चलो मैं 5 रिपीट कर देती हूँ, पहले 5 कर देती हूँ। 11th सेंचुरी, ठीक है वाजिब। तो उससे हाँ ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर मैं टुक बोलती हूँ ना, इट वाज टुक टू चाइना, नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज हम पास्ट टेंस तो है यहाँ पर, लेकिन इट वाज टुक टू चाइना दैट डज नॉट मेक लॉजिकल सेंस। इट वाज गेव टू चाइना डज नॉट मेक सेंस। इट वाज टेकन टू चाइना, वो सेंस बन रहा है। लेकिन अगर इट वाज टेक टू चाइना, इट वाज टेकिंग टू चाइना, तो बाकी सारे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप मुझे बताओ आपको किस ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको डायरेक्टली इसी से समझा दूं। टेकन टू चाइना, हाँ इट वाज टेकन टू। अच्छा देखो वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वाटरमेलन को फिर चाइना लेकर गए थे 11th और 10th सेंचुरी में, और वहां पे अब वो जो है ना चाइना के ट्रॉपिक्स में ग्रो हो रहा है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? चाइना में वाटरमेलन को लेकर गए थे एंड देन उसकी सीड्स वगैरह से वहां पे और भी ग्रोस के टॉपिक्स में अब तक ग्रो हो रहा है, ठीक है। वाजिब, डज दैट मेक सेंस? यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट मोर? नहीं, टेकन देखो, टेकन बाय चाइना नहीं है, टेकन टू। बेसिकली वो बस ये कह रहे हैं कि चलो मैं आपको ये कहती हूँ, द चाइल्ड वाज टेकन टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास उसको लेकर गए थे, ठीक है। इसका मतलब थोड़ी कि डॉक्टर ने उसको लेके रख लिया।
अगर मैं बोलती हूँ इट वाज टेकन बाय द डॉक्टर, तो मतलब होता है कि अच्छा डॉक्टर ने उसको ले लिया, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पे द चाइल्ड वाज टेकन टू द डॉक्टर, ठीक है। तो ऐसे में कह रही हूँ इट वाज टेकन टू चाइना, चाइना तक लेकर गए थे उसको। टेकन बाय चाइना होता ना तो फिर वो कहते हैं कि चाइना ने उसको ले लिया, पर हम यहाँ पे टेकन टू चाइना की बात करें, ठीक है। हो गया। अब मुकीम ने सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 7 की रिपीटेशन का, ठीक है। मुकीम ने किया था ना, ठीक है। अब मुकीम, आई वांट यू टू लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। देखो यहाँ हाँ मैं समझा रही हूँ, हैवियर क्यों नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वाइल वाटरमेलन आर डैश, अगर मैं हैवियर की बात करती हूँ, चलो मैंने फॉर 1 सेकंड मैंने बोल दिया कि ठीक है हैवियर राइट आंसर है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे हैवियर रख दिया। अब आप आगे पूरा पढ़ो, कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। व्हाई? बिकॉज देयर सेइंग कि व्हाइल मैं अगर मैं हैवियर रखती हूँ, वाइल वाटरमेलन आर हैवियर कंपेयर्ड टू कल्टीवेटेड वंस, यहाँ तक तो नो प्रॉब्लम, सब सही है। सम ऑफ विच वे अप टू 25 kg, सही है। हम ये अभी अभी तक हम यहाँ तक ये कह रहे हैं कि वाइल्ड वाटरमेलन जो है ना वो हेवियर थे कल्टीवेटेड वन से, और उनका मैक्सिमम वेट या अप टू की बात हुई ना तो मैक्सिमम वेट इज 25 kg, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये कह रहे हैं कि द हेवीएस्ट, अगर अगर मैं ये कहती हूँ हेवियर है तो इसका मतलब है कि वाटरमेलन का मैक्सिमम वेट 25 kg होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी जो वाइल्ड वाटरमेलन है वो कल्टीवेटेड वाले से हेवियर है, और वाइल्ड का मैक्सिमम वेट 25 kg, तो ऑब्वियसली हेवियर का तो कम होना चाहिए, राइट। लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि द हेवीएस्ट फ्रूट वेइंग 118 kg, सही है। तो दैट इज वाई वो कह रहे हैं कि वाटरमेलन का हाईएस्ट वेट जो है ना दैट इज 118। तो ये यहाँ से कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है कि नहीं, हम तो कह रहे थे कि वो हैवियर है कल्टीवेटेड वन से, और यहाँ पे उनका मैक्सिमम वेट 25 kg बता दिया, तो हाउ कैन अ वाटरमेलन वे 118 kg अगर कल्टीवेटेड वाले वाइल्ड वाले से लाइटर है। तो इसलिए अब आप कह रहे हो, आपका क्वेश्चन ये है कि एक वेट का है तो यहाँ पे वेट का वर्ड आना चाहिए। इफ दैट इज योर क्वेश्चन देन यस यू आर राइट, बट इट इज कॉमन सेंस कि जितना फ्रूट छोटा होता है उतना उसका वेट कम होता है, ठीक है। तो मैं अगर कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि the apples weigh just 10, the apple just weigh 10 kgs, या मैं नहीं, मैं कहती हूँ the apples are smaller than the mangoes, they just weigh 10 kgs। तो ये एक इम्प्लिसिशन, एक कहते हैं उसको एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन है कि हाँ वो छोटा है तो मतलब उसका वेट भी कम होगा। फ्रूट्स में तो यही होता है ना, जितना छोटा उतना वेट कम होता है उसका। तो इसलिए हम कम वेट वालों के लिए यहाँ पे स्मॉलर यूज करें, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता है लाइटर, तो फिर स्मॉलर नहीं देते हो, बिकॉज बोथ आर द राइट आंसर्स। या तो मैं वेट के हिसाब से छोटी बात करूँ या साइज के हिसाब से, दैट इज द सेम थिंग। समझ आ गया मुझे? किसी को और कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में या एनी अदर क्वेश्चन, या शुड आई मूव ऑन? ओके ग्रेट, perfect. Let's move on to passage number 7. I'm giving you guys 5 minutes, 9:14 tak. Read this jaldi se and then we'll start.
Is everyone done with it? Aksa, Mukim, Farida, Devika, Savera. Okay, I'll give one more minute. Kar. But now you guys need to speed up because these are not more than 5 minutes. Okay, I'm giving it 2 minutes. Live, are you done? Fatima? I need a response from Fatima. And Myra isn't here today as well. Farida is done. Yes. Maki. Nisha, are you done? Shabir and Shakil. Are you guys done? ठीक है 30 more seconds and then we'll start. ठीक है Fatima, I didn't get a response from Fatima, right? Aksa, Amani, are you guys सबका हो गया? ठीक है, let's start now. ठीक है? Okay, the first answer I need is from um, Laibasha. Can you please answer the first question? Fatma, you है finally. हर क्लास में बहुत लेट रिस्पॉन्स आता है आपको. Are you done, Fatma, with the passage? Laiba, can you please answer the first question? Okay, Laiba says C. किसी और को कोई कंफ्यूजन है? सी द राइट आंसर. व्हाई? बिकॉज इसमें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था बिकॉज ये प्लेस की बात हो रही है. प्लेस में तो ऑब्वियसली वेरी आएगा. ठीक है. अ प्लेस व्हेन does not make sense, a place although does not make sense, a place where makes sense. तो हम सिर्फ where करेंगे because place की बात हो रही है. ठीक है. The next question lab Fatma, I want you to answer. Fatma Rain. A. Okay, A is the right answer. ठीक है. Anyone जिसको भी और लगा, this passage is a pretty easy one. ठीक है. The northeast India is Asia in miniature, place where the brown and yellow races meet and mingle. ठीक है. Okay, the next question, Savera, can you please answer? There are at least 262. Okay, A कह रहे हैं सब. ठीक है. The correct answer is B. Savera, can you please change your option to everyone, not to private? D is the right answer. Why? Because obviously ethnic groups cannot be identical. Different ethnic groups का मकसद ही होता है कि वो identical नहीं होते. सही है. और क्लोज्ड एथनिक ग्रुप्स भी नहीं हो सकते बिकॉज देयर एटलीस्ट मतलब एथनिक ग्रुप्स है तो दे बेसिकली इम्प्लाइंग कि ओपन है मतलब इन अप्रोचेबल है. ठीक है. सही है. और एज इन ओपन का मतलब है कि दे नॉट कल्ट से सकते जहाँ पे कोई और नहीं जा सकता. वी टॉकिंग अबाउट एज से नहीं हो सकता निशा बिकॉज एथनिक ग्रुप्स आइडेंटिकल होंगे. Why are there 262 of them? Why not one if they're identical? Why not D? Homogeneous का मतलब भी same ही होता है by the way. It's like having the same properties. Identical का मतलब being the same. Like why would there be 262 of them if they're the same? Think about it. Why would there be 262 अगर सब same ही है तो, right? तो अच्छा um, homogeneous and then there's this word called अगर आप लोगों ने science पढ़ा है तो heterogeneous. ठीक है. That means not having the same properties. If वो होता ना तो that would have been the correct answer. But homogeneous का मतलब है having the same properties. ठीक है. So इसलिए इसका answer D नहीं है. ठीक है. There. अच्छा. Question number 4. Mohammed Hassan or Hassan. Can you please answer question number 4? B. B is the right answer. Good going guys. ठीक है. समझ आ रहा है ना सबको? चलो
क्वेश्चन 4 का ए किसने बोला है? ए मारवी ने बोला है, किस नहीं, मुकीम ने बोला है। किसने बोला है? मुकीम ने बोला है। यस, चलो। Also guys, I hope you're noting your scores. इसके बाद मैं आप लोगों से scores पूछूंगी because I just want to see कि सब कहाँ पे कैसा perform कर रहे हैं, ठीक है? तो please do these in class सही से. अच्छा, the correct answer for question number 4 is 4. Let's read this. Take for example the state of Manipur. ठीक है? हमेशा फॉर आता है, यस हम यही कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ गिवन. फ्रॉम एग्जाम्पल तो नहीं लेते ना, लाइक फ्रॉम एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ मणिपुर. अगर हमें फ्रॉम यूज करना होता है ना निशा और मुकीम, तो हम कहते कि टेक फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ मणिपुर, विच समझ आ रहे हैं? हम ये कहते हैं कि उस एग्जाम्पल से ये एक्सट्रैक्ट करो, इंटरप्रेट करो. बट हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? Again, example तो obviously does not make sense. Besides also does not make sense. ठीक है? इस कांसेप्ट पर किसी को कोई कंफ्यूजन है इन 4 सवालों में अभी तक? Moving on to question number 5. Um, Rao, can you please answer question number 5? Rao, you're always active in the first half and then the second half. कोई जवाब नहीं आते. अच्छा, question number 5 में the Rao says it's D, but the correct answer. Oh, sorry, Rao says it's C and the correct answer is C. Good. Chalo, let's read it. Take for example the state of Manipur, which dash Burma with a population of 1.8 million people. ठीक है? अब अगर यहाँ पे इसका आंसर होल्ड होता ना, होल्ड तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लाइक अ स्टेट के नॉट होल्ड अनदर, लाइक दैट डज नॉट मेक लॉजिकल सेंस, राइट? सही है, सी ए नहीं इसका आंसर. तो स्ट्रेचेस होता है ना, तो स्ट्रेचेस के साथ टू होता या कुछ फ्रॉम होता. सही है, स्ट्रेचेस. अगर स्ट्रेचेस करें तो हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे Pakistan stretches from the one end to the other. इस तरीके से from की बात होती है, ये टू की बात होती है, तो यहाँ पे stretches तो नहीं हो सकता, ठीक है? वैसे भी सर सेंस नहीं बनना, बट स्टिल ग्रामेटिकल एरर्स की वजह से नहीं हो सकता. इफ वन टिप इज कि अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा ऑप्शन क्या है तो देख लो, मोस्ट प्रॉब्ली ग्रामर का एरर होगा एक ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है? और बॉर्डर्स होगा, which borders Burma. Okay, D can be the right answer, but एक सेकंड, एक सेकंड. ओ, आई एम सो सॉरी गाइस, इसका आंसर डी है. यस, डी कैन बी द राइट बिकॉज़ का आंसर डी. आई एम सो सॉरी, मैंने गलत देख लिया था. डी इज द राइट आंसर बिकॉज़ बॉर्डरिंग की obviously a state cannot rule another state, right? D is the right answer. I'm so sorry. तो इससे जो है ना इसका आंसर डी हो गया, बिकॉज यहाँ पे मणिपुर और बर्मा बोथ आर स्टेट्स, राइट? तो रूल तो नहीं कर सकते ना स्टेट एक दूसरे पे, तो दे बॉर्डर ईच अदर. तो इससे जो है ना बॉर्डर ईच अदर. किसी को कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? But but how can a country or a state rule another country? Like people can rule, ना? How can a, ठीक है? नो दे टॉकिंग. अच्छा, यू देखो, यू राइट, यस कंट्री को रूल किया जाता है, लेकिन ये बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ मणिपुर की. वो कह रहे हैं कि मणिपुर का स्टेट जो बर्मा को रूल करता है. हाउ कैन ए स्टेट रूल बर्मा? इट कैन नॉट ना, बिकॉज यू कैन नॉट, you cannot like rule a state from आप पीपल से रूल करवाते हो ना, आप उससे थोड़ी रूल करवाते हो, किसी स्टेट से थोड़ी रूल होता है. बर्मा इज country in Asia. That's what we will say, at least. But state, yeah. So let me see. But the debate is not क्या कहते हैं, making sense because यहाँ पे rule की बात आ रही है. तो how can a city, how can a state rule a country or a city? Okay. Action state guys, exactly ना, action state guys. Is it? It's lagging. Wait a second. Is it fine now? Okay, great. Moving on to question number 6. Amani, can you please answer question number 6?
The correct answer is A. Because यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, but चलो let's go through this, ठीक है? It is home to about 30 separate linguistic and ethnic groups, including the Taro. I don't know how to pronounce this. Taros. अच्छा, they're talking about taros who number less than 400 individual. Obviously, अच्छा देखो, you guys have studied parallelism, right? तो जब हम कोई चीज को डिफाइन करके उसके आगे कॉमा लगाते हैं तो we should talk about that thing only. मैं जैसे अगर मैं कहती हूँ कि it was not easy to do the task which was given to me at the 1 hour before the deadline, right? So I'm talking about the task here. So that's what parallelism is. It should be whose. Dekho, Ahmed, they're saying that it is home to about 30 separate linguistic and ethnic groups, including the Taros. Who number? Because हम यहाँ पे लोगों की बात करें, whose number अगर होता ना तो whose number is होता ना, whose number is less than 400 individuals. या whose number is less than 200, because हम whose अगर use करें तो does not make logical sense. who number का मतलब basically वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका total number is less than 400 individuals, किनका taros का, ठीक है? if that is the correct pronunciation, ठीक है? does that make sense to everyone? Not clear, the voice or the question? Okay, I'll explain it to you again. देखो, Amani, they're saying कि it is home to about 30 separate linguistic and ethnic groups, including the Taros. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? They're saying कि मणिपुर जो है ना उसमें 30 सेपरेट लोग हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं, who belong to different ethnic groups. उसमें से एक यानी इंक्लूडिंग अ टैरोस, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप है जिनका नाम टैरोस है, डैश नंबर लेस देन 400 इंडिविजुअल्स, ठीक है? हु नंबर, देखो दिस इज, अगर मुझे हुज यूज करना होता ना, आई वुड हैव सेड हुज नंबर इज लेस देन 400 इंडिविजुअल्स, बट हु, देखो यहाँ पे नंबर नाउन वाला नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पे नंबर वर्ब हो रहा है कि ठीक है कि मैं बोलती हूँ कि माय इंटायर क्लास नंबर 230, या अगर मैं इसको नाउन के तरीके से यूज करूंगी तो बोलूंगी द नंबर ऑफ पीपल इन माय एंटायर क्लास इज 30. डज दैट मेक सेंस नाउ? यहाँ पे इसको एज अ वर्ब यूज कर कि हु नंबर लेस देन 400 इंडिविजुअल्स, ठीक है? समझ आ गया सबको? अहमद, इज इट क्लियर टू यू? Moving on, is Sony here? Anyway, Devika, can you please answer question number 7? Yes, D is the right answer. Okay. Why is it D? Let's see. It is home to about 30 separate linguistic and ethnic groups, including the Taros, who number less than 400 individuals. Okay, allowing the ages and the mountains, the people of this bending tail dash anthropological, sociological dash South Africa. देखो यहाँ पर किसी ने और कोई ऑप्शन बोला हुआ है यहाँ पर? अच्छा, आपने भी बोला है, देखो they're basically saying कि wait, रुको, let me think how to explain it to you. अच्छा देखो, they're saying कि this is one sentence. They're saying it is it is home to about 30 separate linguistic and ethnic groups, including the Taros, who number less than 400 individuals. अच्छा अहमद, I will explain this line, then करे तो we will come back to 7, because जब तक ये solve नहीं हो पाएंगे तो ये फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे इसका आंसर फिलहाल इसको डी रखते हैं, ठीक है?
allowing the ages in the mountains, the people of this winding trail. और 8 का आंसर है वो है, what is 8 आंसर बताओ? Yes, B is the right answer. Form and anthropological and social और इसका आंसर जो है 9 का, 9 का आंसर हमारा बी है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे वो ये कह रहे हैं मुकीम कि देखो देयर सेइंग कि टैरो जिनकी सिर्फ 400 इंडिविजुअल से लेस लोग हैं ना, तो मतलब देयर सेइंग कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, 30 सेपरेट लिंग्विस्टिक एथनिक ग्रुप्स हैं, उसमें टैरोस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मतलब वो टैरोस का बता इसलिए रहे हैं क्योंकि दिस diversity allows the मतलब allows the ages in the mountains and the people of this winding trail to form an anthropological and social bridge to South Asia with the roots of many still, ठीक है। still का मतलब है stay या और an origin from, still का मतलब यहाँ पे है कि deep rooted, ठीक है। अब allowing यहाँ पे इस किसी को समझ, किसको समझ नहीं आ रहा कि allowing यहाँ पे क्यों यूज नहीं हो रहा? समझ नहीं आया, हाँ तो डोंट स्क्रीम, समझ गई, कैप्स लॉक तो बंद करो। अच्छा खैर देखो, बेसिकली देयर सेइंग कि जो स्टेट ऑफ मणिपुर है ना, उसमें इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इतनी डाइवर्स एथनिसिटी है, ठीक है, व्हिच अलाउज द पीपल एंड द मतलब द पीपल टू कनेक्ट टू द to connect and form an anthropological and sociological bridge to South Asia. Basically they're saying कि South East Asia से connect किया जाता है because मणिपुर में बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। दैट अलाउज द पीपल टू कनेक्ट टू साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एशिया की बात हो रही है ना, तो देर सेइंग कि जो बहुत यहाँ पर जितने लोग हैं जिनकी इतनी सारी लैंग्वेज बोलने की स्किल्स हैं, मतलब इतनी सारी एथनिसिटीज है, इतनी सारी एथनिसिटीज और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो दिस अलाउज द पीपल एंड द पीपल टू फॉर्म एन एंथ्रोपोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया। बेसिकली देर सेइंग कि इन डाइवर्सिटी और वेरिएशन की वजह से दे कैन कनेक्ट टू साउथ ईस्ट एशिया। why because their रूट्स जो है ना, बहुत सारे लोगों की रूट्स यहीं पर होती है साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया की बहुत सारे लोगों की रूट साउथ ईस्ट एशिया में होती है, एंड दैट एक्सप्लेन्स कि साउथ नॉर्थ ईस्ट एशिया में ज्यादा, ठीक है, समझ आ गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, yeah, we'll do this one, ठीक है। इसके लिए you guys have 5 minutes and we'll जल्दी से इसको खत्म करें, then you have one more, ठीक है। I'm going to give you guys till 9:37, ठीक है। This is a comparatively easier one, तो try doing this and ओके जुवेरिया आई थिंक क्लास का टाइम ना ओवर हो गया, अब अभी ग्रामर की क्लास है, सो आज के लिए इतने पैसेज ही काफ़ी हैं। Shahid, is your voice lagging या is it my internet? इट्स योर इंटरनेट आई थिंक। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ग्रामर की क्लास है, सो you can leave now. Can anyone confirm if his voice is lagging or is it my internet? Yes, I think my net is unstable too. Can anyone tell me what he just said? Oh, it's grammar class. Chalo, theek hai. Okay, chalo, I'm wrapping it up. Okay. Allah Hafiz. Okay, now Alina is here. And okay, Alina, now you let me first end the previous class.